Hello friends, नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू मैक्रो एंड मार्केट्स विद एसडी। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा मैक्रो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एज वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा मैक्रो फैक्टर्स इस वीक अफेक्ट करने वाला है। जब हमें ये जानना होता है, सबसे पहला काम क्या होता है आप जानते हैं, इट्स नॉट द रेनबो सेटअप, इट्स रैदर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में हर बार हम लोग हर वीक में जाते हैं और हर वीक में जाके इफ यू आर अ फुल टाइम इंडियन इक्विटी ट्रेडर यू गो फॉर 3 स्टार इवेंट। एज आई एम अ ग्लोबल प्लेयर आई प्रेफर टू लुक एट द 2 स्टार इवेंट्स। पहले आ रहा है इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन, फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेटली जो भी आप सोचे, दिस विल नॉट मैटर मच फॉर आवर काइंड ऑफ ट्रेडिंग, ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल कमोडिटीज, करेंसीज। इंडियन डेटा विल हैव नो इम्पैक्ट। जो मेजर जो डेटा आ रहा है दैट आई कैन सी द जीबीपी के लिए ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का डेटा आ रहा है मंगलवार यानी ट्यूसडे को सुबह 11:30 बजे। इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग बंद हो चुका है फॉर स्पेकुलेटर्स के लिए, बट बाहर से जो लोग ट्रेड कर रहे हैं जीबीपी, this is a very important data for you. You can see some significant move depending on how unemployment rate comes. In general, मेरा फोकस रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड हो रहा है कि नहीं। इस फेज ऑफ द ये जो हम सब साइकिल में रिसेशनरी, इस फेज में अनएम्प्लॉयमेंट शुड गो अप एंड एम्प्लॉयमेंट शुड गो डाउन। सो ये मेरा वन ऑफ द फोकस रहेगा, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। वी हैव सम ऑफ द फेड स्पीकर्स मतलब फेडरल रिजर्व के जो प्रेसिडेंट है डिफरेंट ब्रांचेस के, दे वो लोग बात करते हैं मीडिया में एंड देयर what their narratives उनका बात influence करता है interest rates को। Now we have the next जो piece of more important data than Tuesday's unemployment for GBP is the inflation rate. If the inflation rates declines further, the expectation the Bank of England will cut interest rates will go up and GBP might fall. Main focus रहेगा core inflation, क्योंकि हेडलाइन ऑलरेडी गिर के 2% हो चुका है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट लाइक फूड एंड एनर्जी। कोर इन्फ्लेशन में बिगर डिक्लाइन चाहिए टू पुश जीबीपी लोअर। मेन जो इवेंट फॉर द वीक है जिसके साथ मेरा लाइव सेशन रहेगा स्टूडेंट्स के साथ, यू नो दैट दिस इज द इन्फ्लेशन डेटा। हम लोग इसके साथ ब्यूटिफुली एक दूसरे एसेट क्लास कैसे कनेक्टेड है वो हम लोग समझेंगे। This is the US inflation data coming at 6 o'clock. This is the data for us. ये पूरा थीम समझने के लिए किस टाइप ऑफ ट्रेडिंग चल रहा है, इक्विटी अगर बाई हो रहा है, क्या बॉन्ड सेल ऑफ हो रहा है, अगर बॉन्ड सेल ऑफ हो रहा है हाउ इट इज रिलेटेड टू द कमोडिटीज, सब कुछ समझने में ये डेटा मुझे हेल्प करेगा। और मैं ये दिस इज द मेन इवेंट और मेन डेटा फॉर द होल वीक फॉर माय काइंड ऑफ ट्रेडिंग। एंड कमोडिटीज करेंसीज ग्लोबल मार्केट के लिए, इवन इंडियन मार्केट का मूड सेट करने के लिए दिस डेटा विल बी परफेक्ट। वी वंस अगेन कैन सी मेजर जो बाउंस बैक चल रहा है उसको पुश मिल सकता है या बाउंस बैक के बाद फिर से करेक्शन आ सकता है। एज इन्फ्लेशन अगर घटा नहीं, इन्फ्लेशन रिमेन्स ऑन द हायर साइड, रेट कट जो एक्सपेक्टेड है, ये आई डोंट थिंक ये फालतू एक्सपेक्टेशन है कि फेड इंटरिम रेट कट करेगा अचानक बिना मीटिंग का रेट कट करेगा, 50 बेसिस पॉइंट्स करेगा। इट मेक्स लेस सेंस। मुझे लगता है 25 बेसिस पॉइंट्स से विल बी देयर। सो कोर इन्फ्लेशन अगर नहीं गिरा, अगर इन्फ्लेशन रेट हेडलाइन नहीं गिरा, देन ऑब्वियसली उसमें रीप्राइसिंग होगा, इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप एंड इक्विटीज में वंस अगेन सी करेक्शन, सेल ऑफ का करेक्शन। देन उसके बाद यूके का डेटा आ रहा है इज ऑन थर्सडे। जीडीपी नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्लोबल मार्केट्स, मोर फॉर लोकल, दैट मींस ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये करेंसी एक्सचेंज रेट में इन मूवमेंट होगा। वंस अगेन फ्राइडे आ रहा है यूके का रिटेल सेल्स। सो यूके का इकोनॉमिक हालत के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलेगा ये आने वाले वीक में। Then obviously we have, this is the main Thursday is our Independence Day, so our market will remain closed. इससे पहले इंडियन मार्केट बंद हो जाएगा, तो दोस्तों बी वेरी केयरफुल, कौन सा सौदा आप छोड़ के जा रहे हो। दिस कुड बी अ ट्रेंड चेंजिंग डेटा, बी केयरफुल ऑन द डाउन साइड, क्योंकि अपसाइड रिस्क कम है।
अपसाइड अगर मार्केट गया दैट्स गुड, वी यू हैव स्टॉक, बट व्हाट इफ इट गोज डाउनसाइड, इट मूव्स लोअर, डाउनसाइड रिस्क को यहाँ पे माइंड कीजिए और उस हिसाब से सौदा छोड़ के जाइए, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन इन दिस डेटा डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स द आउटकम इज। आई थिंक मार्केट इज ओवर एस्टिमेटिंग, ओवर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है टुवर्ड्स दिस रेट कट। थोड़ा समझते हैं मार्केट क्या समझ रहा है ये रेट कट को लेके या इन्फ्लेशन को लेके, और इसके लिए मैं जो टूल का इस्तेमाल करता हूँ दैट इज EN मैक्रो माइक्रो, ये वेबसाइट का मैं इस्तेमाल करता हूँ। दिस इज माय फेवरेट मैक्रो वेबसाइट। आप लोग जो मेरे स्टूडेंट्स आप चाहो तो इनके साथ जुड़ सकते हो at a 67% special discount only for my students. So यहाँ पे मैं क्या करूंगा, I'll go here and I'll go to topics, I'll go to central bank under topics. सेंट्रल बैंक के अंदर मैं फेडरल रिजर्व का बात कर रहा हूं क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है। ये अभी करंटली एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि देयर विल बी 100, 4 रेट कट होगा, 3 ही मीटिंग बाकी है, एक सितंबर, एक नवंबर एंड एक दिसंबर। ये तीनों दिन मेरा लाइव मैराथन रहेगा, 2 दिन, एटलीस्ट 2 दिन। नेक्स्ट सितंबर में ये 3 दिन का लाइव मैराथन होगा। सो 100 बेसिस पॉइंट्स रेट कट एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मीटिंग में एक रेट कट होगा 25, बट नवंबर मीटिंग looks like a 50 basis points rate cut. That is still somewhat possible because if inflation really drops fast, then Fed will have a leeway to cut faster. But first of all, at least in the September meeting, I'm seeing market is pricing so far 1 rate cut, 2 rate cut is not at all priced, but inflation अगर higher side में आया, फिर से रिप्राइसिंग होगा 100 बेसिस पॉइंट्स रेट कट से, ये लोग चले जाएंगे 75 बेसिस पॉइंट्स रेट कट। तो एक्सपेक्टेशन जैसे चेंज हुआ उसका इम्पैक्ट तो बाकी एसेट क्लास में पड़ना ही है, और वेरी लाइकली इक्विटी में डाउनसाइड प्रेशर फिर से वापस आ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। ना इसके साथ साथ क्या करेंगे, विल गो टू ट्रेडर्स इनसाइट में चलते हैं। ट्रेडर्स इनसाइट में जाके एक बार ग्लोबल स्टॉक मार्केट को देखते हैं। ग्लोबल स्टॉक मार्केट में क्या रिटर्न मिला है लास्ट 1 मंथ में। अगर यूएस डॉलर बेस्ड रिटर्न देखे, कौन सा मार्केट हैज बीन टॉप परफॉर्मिंग, इट्स मलेशिया, अर्जेंटीना, थाईलैंड, फिलीपींस and Indonesia, and marginal India. India is down minus 1.15%, whereas Taiwan, which is more semiconductor driven, ये नोट कीजिएगा, things are changing, the AI side of story is now fading मतलब वो overcrowded trade था, उसका opposite move हो रहा है। Taiwan is that AI trade. Taiwan is going down. South Korea similarly. जापान काफी हेवी सेल ऑफ हुआ है अक्रॉस द इक्विटी मार्केट। अगर हम लोग डॉलर टर्म्स को छोड़ दे, मतलब डॉलर का वीकनेस हुआ है, डॉलर का वीकनेस एक्चुअली हाइड कर रहा है कितना डाउन मूव हुआ है एक्चुअल मार्केट में। अगर डॉलर का वीकनेस मैं हटा दूं तो आप देखिए स्टॉक मार्केट, ये जो सेमीकंडक्टर SOX was down 18.45, Nikkei is down 15, Turkey is down 11%, Nasdaq US का टेक हेवी इंडेक्स is down 9, Taiwan is down 8.9%. Majority of the market except for Bovespa, which is Brazilian index, all the market has fallen. We have fallen much less compared to others, but risk काफी बढ़ा हुआ है। We are in a recessionary cycle, और हम लोग अब सेकेंड फेज यानी क्रैश फेज के एकदम पास आ जा रहे हैं। We are not there yet, but हम लोग ऑलमोस्ट पास आ जा रहे हैं। Lot of signals are coming up. सो लास्ट 1 वीक का जैसे मंथ का रिटर्न देखे, सिमिलरली 1 वीक यूएस डॉलर बेस्ड रिटर्न अगर देखे तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडिसेस आर एक्चुअली कमिंग बैक, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक अक्रॉस द इंडिसेस, और अर्जेंटीना, ताइवान, जापान, दे आर लीडिंग।
if we consider only 1 week return. So it has been a major bounce back. So equities में risk फिर से वापस आ रहा है. जैसा मैंने बोला, how to decide when to get aggressive is I'll decide with the VIX, volatility index. तो अगर VIX है तो चलिए VIX को देखते हैं. Now we are going towards the VIX. मैं कोई दूसरे वीडियो में निफ्टी को देखूंगा. There is time to watch Nifty. There is no hurry. It's just market starting up Monday morning. So this is the VIX. VIX is falling finally, which is positive. But I don't have a clear sell signal like I did in June in the VIX. And by compared to standard we seen in July or in even June, August, the VIX is elevated. The VIX is quite elevated above 19 level. Ye level pe, so it is highest since the May. So we will want volatility index to further come down, thanda shant ho jaye, then only we'll be more aggressive towards equities. Currently volatility has significantly fallen. अगर मैं चाहूं तो मैं एक metrics add कर दिए जाएंगे which will measure the general risk, different risk levels for you within the Rainbow setup. So until that time you can watch the VIX. So VIX को दिख रहा है कि it is background bearish. This has been good news for equities in general, but it's still not enough. It's not done. It's not over. So now with this, let's go back to different other asset class, how they have done. So now we are going to Traders Insight once again. Traders Insight, we're going to the markets. Under markets, I'm going to commodities. So we are going to take a look at how commodities have done in the last 1 month. It's basically the lumber, cocoa. These two have gone up in price in the last 1 month. Lumber is going up and also US housing prices has been higher. Let's see what they have done in the last 1 week. 1 week we saw a lot of commodities are coming back. Lot of commodities may obviously cocoa, jahan pe crisis chal raha hai, cocoa related. Cocoa is leading, and what a beautiful comeback hua hai natural gas. So natural gas, after we got a beautiful buy signal, I have started assuming risk. As it goes up, I'll assume more and more risk in natural gas. Natural gas and the cocoa and crude oil, these group looks pretty strong in terms of commodities. So next week, जो मेरे learners हैं, जो लोग eligible है, I'll see you on 14th covering this US inflation market. I think this week, जिस तरह market बढ़ रहा है, we are going to have a lovely trading time. आप लोग मेरा commodity, currency and equity का follow up video देख सकते हैं जानने के लिए which asset class what I am thinking. This is a general overview of the macro. I hope you enjoyed this review. All the best from my side, and as always, happy trading.